Well, the next story that we are going to talk about could be a sequence straight out of a Bollywood film. Income tax officials disguised as Baratis to carry out a series of raids in Maharashtra's Jalna. The income tax officials arrived in Jalna in wedding cars, and these cars had stickers of Rahul weds Anjali. These stickers, and they uncovered 390 crore of illegal assets, including 58 crore of cash, 32 kgs of gold and diamonds worth 14 crore in 8 days of raids. The raids were conducted at the residential and official premises linked to 2 business groups dealing in steel, clothing and real estate. It took over 13 hours for the IT officials to count the cash with 12 currency counting machines. That is the amount of cash that was recovered. It's really startling that Jalna is a small town in Marathwada, which is a part of the central Maharashtra, and it has a lot of small and medium industries around, and such amount of unaccounted cash and a lot of Benami properties have shocked one and many. Besides the modus operandi of IT sleuths who were dressed as Baratis and who raided the premises, the sheer amount of cash, 56 crores of wealth in a really small town, 56 crores in cash, 32 grams in gold, and totally assets worth around 390 crores. What I'm told, and after I spoke to experts, what I learnt is this is not the first time when this informal steel industries, which makes rods and sariyas that are used in the building industry, in the real estate industry, is raided. There was another big raid that happened in September 2021 in the same place. Well, let's get in more perspective here. Shantanu Sen, former Joint Director of the CBI, and Suresh Kesapurka, Senior Journalist, Maharashtra Times, joining us. Thank you, both of you, for joining us. Suresh, if I can come to you first, give us a sense of, this entire raid that we've seen, because clearly it seems like this is emerging as a new town of Benami wealth, so to speak, in terms of, and how long would you say it's been under the scanner of agencies? I will tell you, this is not new for us. Yes. Because in our city, Jalna, every year income tax officers comes and they checks all this, because this is a steel hub. It's a very big steel hub in Jalna. There are more than 12 big industries. Kalika Steels, Metarol, Bhagyalakshmi, Rajuri, all are branded steel industries. The daily production is more than 10,000 metric ton per day. And there is no holiday because the production system is such that the 10,000 metric ton production is daily. They are spending more than 150 crores electrical bill per month. And same amount of GST, all these things, more than 15,000 workers are working in this industry, and directly 15,000, and more than 50,000 indirectly. So the industry is very big. Now, why the income tax officers coming, or why this ये क्यों आते हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि this system is ये system के कारण होता है. यहाँ इसका जो raw material है, raw material for this industry is bhangar, means scrap. The bhangar जो आता है scrap, तो घर घर में से collect होता है, and there is no receipt फॉर भंगार की कोई पावती नहीं होती है. हाँ जी. जो लेते हैं वो भी और देते हैं वो भी. तो 75 to 80% रॉ मटेरियल इज भंगार, एंड 20% आयरन ओर, दैट मिनरल्स, स्पंज आयरन एंड आयरन ओर. सो जो इनपुट है भंगार, वो पूरा कच्चे में होता है. एंड सेकंड थिंग इज दैट्स व्हाई मोर कैश इज रिक्वायर्ड इन दिस इंडस्ट्री. रोक रकम बहुत ज्यादा कैश लगती है, क्योंकि ये पूरा ट्रांजैक्शन कैश में ही होता है. एंड सेकंड थिंग, जो स्टील बार्स तैयार होते हैं, जो इंडस्ट्री इसमें यूज किए जाते हैं बिल्डिंग्स में, तो उसको जीएसटी है 18%, 18. दैट्स व्हाई कोई भी कंज्यूमर है जो
छोटा कंज्यूमर है वो रिसीट मांगता ही नहीं है, तो वो जीएसटी भी उनको जीएसटी की बहुत सारी चोरी यहाँ होती है। वो एक इसका मेन कारण है ये ब्लैक मनी जनरेट होने का। ऐसा इसमें इसका एक कारण है। जी बिल्कुल. Let me also go across to Shantanu Sen. Your perspective here, because this is not a small amount. We're talking about huge amounts of 58 crore that was discovered in cash, along with a lot of gold and diamonds. What is the kind of process in such cases that's followed? I am amazed, and I was listening to Suresh ji, Yes. all agog. मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं. This is happening repeatedly, I am told, in Jalna. So they commit crime, they generate black money, huge amounts, and the modus operandi is very simple. They buy in cash, they don't give any receipt, and therefore there is no problem at all in sort of collecting cash. And this is happening every year. So सुरेश जी ने जो बताया वो सुन के मैं तो बहुत ही आश्चर्य हो गया, और मैं हैरान हूँ सोचने में कि कितने जगह इंडिया में जहाँ इंडस्ट्री फैला हुआ है यहाँ पर ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है. सिर्फ 6 करोड़ से कम लोग टैक्स पे करते हैं. There are hardly 6 crore people paying income tax, and so many who should be paying taxes do not pay. हमारी जो गवर्नमेंट मिशनरी है that has failed to stop generating black money. Our Prime Minister so many times he has said that काला धन बंद करना है, फिर भी हमारे जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो बिल्कुल फेल हो गई है. और ये जो पकड़ा जा रहा है हम लोग सब जानते हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग ही होता है. आइसबर्ग बहुत बड़ी चीज़ है, नीचे धांधलीबाजी चलती रहती है और ऊपर थोड़ा सा टिप पकड़ लेते हैं और फिर शुरू हो जाता है. सुरेश जी ने तो साफ साफ कहा ये हर साल होता है. तो आप समझ लीजिए कि इनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई फाइन नहीं, कोई परेशानी नहीं है, और ये ऐसे ब्लैक मनी करते हैं. ये स्कारलेट पिम्पलर बन के इनकम टैक्स ने स्लो तो कर लिया और नाम भी कमाया, पर इनको पूछा जाना चाहिए कि आपने इसे रोका क्यों नहीं, आप इनसे टैक्स भराते क्यों नहीं है, इनके चार्टर्ड अकाउंट्स इनको आप पकड़ते क्यों नहीं है. बहुत बड़ा काम फैला हुआ है. सिर्फ पकड़ने से कोई सेटिस्फैक्शन मुझे तो नहीं है, क्योंकि जितना पकड़ा जाता है वो हमेशा टिप ही होता है, और नीचे आइसबर्ग जैसे नीचे रहती है वहाँ धांधलीबाजी चलती रहेगी. इससे कोई खुशी की बात तो नहीं है. खुशी की लहर होनी चाहिए, और हम अपने निकम्मापना जाहिर कर रहे हैं. जी बिल्कुल Shantanu Sen, I think that's extremely important that you pointed out, because this is one small town in Maharashtra, and this is the extent of, and one raid here, so you can imagine how much it is really spread out. A very very valid point that you pointed out there. But सुरेश जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो अभी हमने देखा है, जैसे आप बोल रहे थे जालना में ये बार बार होते जाता है, लेकिन कुछ is there any sort of reaction or any sort of efforts being made to try and reduce this entire thing from the root से, जड़ से ये प्रॉब्लम सुधारने की कोशिश की गई है क्या? आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे ऐसा कहना पड़ता है कि ये सिस्टम सुधारने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके तरफ से बिल्कुल कुछ भी प्रयास नहीं होते हैं. उल्टा तो मैं ऐसे बात आपको बताना चाहता हूं कि जो इतने इंडस्ट्रियलिस्ट है जालना में, तो जालना एक ऐसा शहर है कि यहाँ के जितने ये स्टील के इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, ये लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, लोकल है, ये जालना के भूमिपुत्र है. ये आप अगर देखते हैं तो बंबई में या पूना में या और बड़ी बड़ी सिटी, नासिक हो या औरंगाबाद हो, वहां का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां जो लोगों ने इंडस्ट्री लगाई है वो गांव के रहने वाले होना ऐसा कोई जरूरी नहीं. वो बाहर गांव के आके वहां इंडस्ट्री लगाते हैं. लेकिन ये जालना की जो ये टोटल स्टील इंडस्ट्री है, तो ये सभी लोग हमारे गांव के नागरिक है,
जालना के रहवासी है, यहाँ पढ़े हैं, इनके बाप दादा यहीं के हैं रहने वाले, और ये पूरे बिजनेस कम्युनिटी से है। बेसिकली ऑल आर मारवाड़ीज। मारवाड़ी में माहेश्वरी है, अग्रवाल है, और वो उनका परंपरागत ये व्यवसाय है। ये जो इंडस्ट्री है, सर ने जो बात कही, इसका स्वरूप ही ऐसा है कि इसमें ब्लैक मनी जनरेट होता ही है। मैंने जो कहा, क्योंकि इसका जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो और फेयर जो प्रोडक्शन है, लास्ट वो सड़ई जिसको बांधकाम में स्टील बोलते हैं, तो वो दोनों पे ऊपर जालना में थोड़ा सा काम, यहाँ पे स्टील का क्लस्टर होना चाहिए। बहुत लोगों ने इसकी डिमांड की है। तो स्टील अगर क्लस्टर बन गया तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वो लोगों को, वो इंडस्ट्री को कुछ सपोर्ट मिलेगा, उनको कुछ गाइडेंस मिलेगा, उसमें कुछ लीगलिटी आ जाएंगी। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे नितिन जी गडकरी ने ड्राई पोर्ट का इनॉग्रेशन यानी भूमि पूजन किया, उसको 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक ड्राई पोर्ट का कुछ भी काम नहीं हुआ है, वो अभी एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ है। अगर ड्राई पोर्ट यहाँ से चालू होता है तो ये इंडस्ट्री 10 टाइम्स इंक्रीज होंगी, बहुत फास्ट इंक्रीज होंगी। लेकिन उनको जो भी बेसिक चीजें लगती है वो इनको कुछ मिलती नहीं है। और ये धंधे का स्वरूप ही ऐसा है, मैंने जैसे कहा ना कि इसका जो रॉ मटेरियल है वही इलीगल लेना पड़ता है ना, स्क्रैप जी। जो भंगार है। और जो फेयर गुड बेचते हैं जैसे स्टील है, उसके ऊपर 18% जीएसटी रखा है। तो कोई भी जो घर बांधने वाला व्यक्ति है, वो अगर समझो उसको एक 5 लाख का स्टील लेना है, तो हाउ ही विल वो 18% जीएसटी कैसे क्या भरेगा? तो वो बोलता है कि भाई मुझे विदाउट रिसिप्ट दे दो, तो उसमें 18% बच जाते हैं उसकी। तो वो जीएसटी कम होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ विचार होना चाहिए, और रॉ मटेरियल के बारे में भी कुछ ना कुछ विचार होना चाहिए। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होता नहीं है, ये सबसे मेन इसमें की बात है। और ये पूरा ब्लैक मनी जनरेट होने का यही कारण है। और पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट को, ये ऑफिसर्स को ये बात अच्छी लगती है, ऐसा मेरा एक व्यक्तिगत मत है इसके बारे में। जी, Shantanu Sen, if I can ask you one final question on, when such raids and such high-profile raids are really carried out and such a large amount of money is recovered, it's obvious that this is going much deeper and there are probably multiple other connected, issues and raids that probably need to be carried out. How does a central agency function, whether it is the IT department or the CBI or any other central agency, in such cases when it comes to looking at the affiliated or the connected, cases? You have to be congratulated for raising this issue. This is, as Mr. Suresh ji has just explained, this is a corruption-involved industry with the willing consent of the machinery which must stop the corruption, as you see it. I don't have to say it. It is prima facie obvious that the government agencies who catch them at the end of the year show it as a showpiece. They very well know corruption is going on, and they allow the corruption to fester, so at the end of the year they can put up a show that they have done a remarkable job. As Mr. Suresh has just explained, even the dry port, which was a showpiece, has not yet started functioning. So I will request and very, very forcefully suggest that you must carry out this mission of exposing this and exposing the government agencies who are involved in letting the corruption going on. This can be stopped. GST taxes, whatever has to be done has to be collected. This free sale, cash sale has to end, or they must find a way of recording it. It may not be possible for the scrap dealers to open an account, but if they are paid in cash, then there must be a record of it with the agency. Something must be done to work on this regular collection of black money every year, and it's showpiece, just a showpiece collection by the agencies. Yes, fair. It cannot be allowed to continue. And Jalna is one place. Yes. There may be many other small towns which is happening, and
what is direct, what has to be collected in taxes either through GST or other ways is not being done. So this raid is a example of absolute failure of the government agencies to stop generation of black money. It is not an achievement. It's an example of how black money has been generated Yes. in many places. Absolutely. Shantanu Sen, Suresh Kesapurka, thank you so much for joining us with your perspective. Thank you. On that note, we'll slip into a very quick break. Stay tuned.